उनके पीछे थे प्रोफेसर के विजय राघवन जी, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इस तरीके से फिर से एक बार उन्होंने डॉक्टर सुरेश जी के सामने उनसे हाथ मिलाए, डॉक्टर टी के एलेक्स जी, डॉक्टर पी एस गोयल जी, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करते हुए। So the countdown is at minus 12 minutes. So within the next 12 minutes, you will have the command that will be issued for starting the descent phase of Vikram lander. So Honorable Prime Minister of India is seated in the dignitaries gallery along with some of the other senior officials of ISRO as well who are here. And in the dignitaries gallery, we also have some of the other prominent and very important dignitaries who will be witnessing the launch. As you would have seen during the coverage, we have a lot of students who have been invited here to witness the launch. This basically, the students who are here have been selected based on the online space quiz competition that was conducted for the students who are in the range of class 8 to 10 across all the states in India. And finally, 2 students from each of the state and union territories have been selected to witness this historic lunar landing event along with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So today we have amongst us nearly 84 plus school students who are here in the Mission Operations Complex. जी हाँ, आपको याद दिलाता चलूं कि चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम मिशन चंद्रयान-1 श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की रासायनिक, खनिज विज्ञानी एवं प्रकाश भूविज्ञानी मानचित्रण हेतु चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। अभियान के इस मुकाम पर उपयुक्त होगा अगर हम उन दिनों की भी याद कर लें जब इस उपग्रह को GSLV Mark 3 M1 द्वारा 22 जुलाई 2019 को 14:43 पर 973.7 सेकंड की उस उड़ान ने चंद्रयान को 181.617 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि अभी आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग के जरिए उसी तरह की उन्हीं घटनाओं की याद दिलाई जाए ताकि हम यहाँ से और आगे बढ़ सकें। इस समय हम करीब 11 मिनट की दूरी पर ये एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग आपके लिए, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आपको याद दिला सकें कि कैसा था वो प्रक्षेपण। We have the view of the Mission Control Center at the Mission Operation Complex. 8, 7, 6. So short video documentary for you, and just to depict the launch that has happened on 22nd of July from Satizan Space Center. This is the liftoff of the GSLV Mark 3 launcher from Sriharikota. So as you can see, the 2 solid strap-ons, 200 tons each, have been separated. So now we are in the stage where the payload fairing, inside which the Chandrayaan-2 spacecraft, including the orbiter and lander, is there. The separation of the first stage, the liquid stage L110, and finally the launcher placing the Chandrayaan-2 spacecraft in an orbit of 170 by 39,000 kilometers around the Earth. So once the orbit of the Chandrayaan-2 was 39,000 kilometers with a perigee of 170, as you can see on your screen, using its propulsion system, it performed 4 earthbound maneuvers to raise the orbital altitudes in preparation to enter the lunar transfer trajectory and then go to the lunar orbit. So right now what you're seeing is the orbit of Chandrayaan-2 being raised around the Earth, and once this is done, the spacecraft has entered the lunar transfer trajectory phase, and it is proceeding towards the moon's orbit, and
very shortly you will see the Chandrayaan-2 spacecraft has been captured in the sphere of influence around the moon, and it will start orbiting with an altitude of almost 18,000 kilometers by 120 kilometers, and then subsequently using the propulsion system of the Chandrayaan-2, which is the orbiter module, the orbit was brought down to an altitude of almost 100 kilometers. In the process of bringing it down from 18,000 to 100 kilometers around the moon, it performed nearly 4 orbital descent maneuvers, and you can see now the orbiter and the lander Vikram will get separated, and eventually the Vikram lander module, using its propulsion system, has brought down the altitude to something like 30 kilometers by 100 kilometers. So as I have mentioned repeatedly, the Vikram lander module is presently in an orbit of around 30 kilometers. By 100 kilometers, 30 kilometers is the minimum height above the lunar surface, where the powered descent operations will be starting. And I think we are very close to the event when the Vikram lander thruster will be initiated. Roughly around 6 minutes to go before we start the power descent operations. जी हाँ, हम करीब करीब 7 मिनट की दूरी पर जहाँ से डिसेंट शुरू होना है, जहाँ से उस घड़ी की शुरुआत होगी जब हम लगभग 35 किलोमीटर की पेरिजी की ऊंचाई से हम उतरना शुरू करेंगे। जिन दर्शकों ने अब इस अभियान को शुरू से फॉलो नहीं किया है, उनकी जानकारी के लिए संक्षेप में बता दूं कि प्रक्षेपण के पश्चात 24, 25, 29 जुलाई और 6-8 अगस्त को इसमें तकरीबन 508.4 किलोग्राम प्रणोदक का कुल 3604.254 सेकंड तक प्रज्वलित कर कक्षीय परिवर्तन किया गया, जहां कक्षा उत्थान किया गया। इसके पश्चात 13 अगस्त को ट्रांस लूनर इंजेक्शन TLI के दौरान 166.8 किलोग्राम प्रणोदक की खपत कर 158.309 मीटर प्रति सेकंड की वेग वृद्धि की गई और चंद्रयान-2 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर मिशन के लंबे अतिपर्वणीय पथ पर एक ऐसा बिंदु आता है जो चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र के अंदर होता है। इसे लूनर ऑर्बिटल इंसर्शन या LOI कहते हैं, और इसी बिंदु पर भू आदेश के द्वारा कक्षा की दिशा में परिवर्तन कर उसे चंद्रमा की दीर्घवृत्त कक्षा में पहुंचा दिया जाता है। फिर 20, 21, 28, 30 अगस्त और 1 सितंबर को 745.04 किलोग्राम प्रणोदक को कुल 4422.809 सेकंड तक प्रज्वलित कर चंद्रमा की निम्न कक्षा में प्रवेश करा दिया गया। इस समय पेरिलून लगभग 120.5 किलोमीटर और एपोलून 126.1 किलोमीटर प्राप्त कर लिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर इसरो उपग्रह केंद्र के UR राव उपग्रह केंद्र के विभिन्न वरिष्ठ वैज्ञानिकों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि इस समय हम केवल 5 मिनट की दूरी पर हैं और हर छोटी बड़ी घटनाएं जो भी इस समय लगातार घट रही हैं उनका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। और जिस समय हम करीब 1:38 सुबह के हम चंद्रमा के उस बिंदु पे पहुंचेंगे जहां ऊंचाई करीब 35 किलोमीटर होगी, उसी क्षण में ऑर्बिटर भी जो होगा वो बिल्कुल उपग्रह के ऊपर होगा, इस तरह से ताकि हम उसके चित्र प्राप्त कर सकें। So minus 3 minutes 53 seconds before we start the power descent operation. Just to give a quick update on the way the total power descent operation for the Vikram lander would be carried out. The descent operation would, as you can see on the screen, we are at 3 minutes to go before we start these operations. So Vikram lander would commence from an altitude of 30 kilometers, and once this descent operation has started, it will be for a duration of nearly 15 minutes before it touches down on the lunar surface. And the Vikram landing sequence is achieved through an autonomous landing sequencer. And just to give an update, the final state vectors and other parameters have already been loaded into the Vikram lander 4 hours prior, so it's all ready to go and start its operations. So as per the power descent plan, it's expected to start at 1 hour 38 minutes Indian Standard Time. As I mentioned, we are just less than 3 minutes now,
And this entire power descent operation will be carried out in 4 different phases of operation, namely the first phase, which is the phase referred as rough braking phase, will bring the spacecraft from 30 kilometers to an altitude of almost 7.4 kilometers. The second phase after the rough braking phase will be attitude and absolute navigation control phase, which will enable the spacecraft to travel from 7.4 to 5 kilometers. And then immediately we will have the third phase of operation, which is the fine braking phase, where we bring down the spacecraft from 5 kilometers to almost at an altitude of 400 meters above the surface where the landing is supposed to happen. And eventually from 400 kilometers, the spacecraft will not have any forward moving velocity. It will be only used to have a vertical descent for a touchdown. Will be brought from an altitude of 400 meters to 100 meters to 60 meters to 10 meters and finally the touchdown. So as we go through these operations, as I mentioned, it will be a 15 minutes of descent operation. Once the activity is initiated, we will be bringing you some of the flight parameters and the status, how the total operations are going on. So each of these phases during the power